वेलकम टू प्रिंस स्टूडेंट हाउस। स्टूडेंट्स, हमारी बेसिक स्पीड क्लास कहेंगे। बेसिक स्पीड क्लास हमारे यहाँ 62 है। 61 क्लास में हमने जो पीडीएफ डाली थी इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग फ्रेजेस, उसके रिगार्डिंग उन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए एक्सरसाइज नंबर 205 206 एंड 207 हम डिटेल कर रहे हैं। 80 वर्ड्स ए मिनट आपको ध्यान से पहले प्रैक्टिस करनी है। पहले मैंने कहा था पिछली क्लास में कि आपको हर एक पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी है, बुक से प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, उसको फिर स्पीड से लिखना है हमारे यूट्यूब से, ताकि आप स्पीड में लिख सकें। तो एक्सरसाइज नंबर 205 रेडी, स्टार्ट। द हिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग इज अ वेरी fascinating subject, and the remains of remote antiquity as exemplified in the pyramids of Egypt and of Stonehenge in our own island testify to the early skill of man in matters relating to engineering. It was about the middle of the 18th century that the profession of engineering originated, and today it is one of the foremost in the world. There are many subdivisions such as military, mining, mechanical, civil, railway, sanitary, and electrical, and as electrically is now so generally applied, it is necessary for most engineers to be electricians also. Electricians must understand what is meant by earth currents, eddy currents, electric currents, alternating currents, residual charge, resistance board, rotary transformer or rotary converter. Next exercise number 206. The railway engineer is concerned more or less with block signals, heating apparatus, Bessemer steel and vacuum brakes, while the mechanical engineer pays a special attention to automatic apparatus, a combustion chambers, exhaust values, low pressure cylinders and high pressure cylinders, mechanical stokers, site feed lubricators and water cooling plants. He has to consider the advantages and disadvantages of the lever and weight safety value and the spring balance safety valve, and also of the surface condenser, which is a device employed for condensing exhaust steam without mixing it with cold water. The method is now universally used in marine engines. Next, exercise number 207. Among other things, the electrical engineer should know that power delivered from the monophase generator is pulsating, that from the multiphase generator is constant, that current density is the amount of current per unit of area of a cross section of a conductor, that an induction coil is an apparatus used for obtaining a very small current,
at a very high voltage form a battery current of low voltage, and hence really a transformer especially adapted to work a continuous current from a few cells. That a primary coil is that coil of an induction coil, transformer, etc., though which flows a primary current with the original current whose fluctuations are to be utilized in order to induce another or secondary current in the secondary coil of the apparatus, and that copper loss is the waste of energy through the resistance of copper circuits in electric plant, the energy being dissipated in the form of heat. The dynamo is a reversible machine, that is to say, it may be used either as a dynamo or as a motor. In the first case, the machine is driven by a steam engine or gas engine or turbine and gives out electrical energy. In the second case, electrical energy is imparted to the machine. Stop. स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इससे आगे की एक्सरसाइज हम इसमें पीडीएफ जो डाल रहे हैं अभी रेलवे फ्रेजेस आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और यही आपको फ्रेजिंग आगे अच्छी स्पीड की ओर ले जाएंगे, बिकॉज ज्वाइनिंग मस्ट होती है, ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो आपका टाइम डबल हो जाता है। 80 से आपको अगर 120, 130, 140 जाना है तो ज्वाइनिंग बहुत ज़रूरी है, इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। यही नहीं कि डिक्टेशन लिख ली बस हो गया, नहीं, बैक में जाइए, फ्रेजिंग को अच्छी तरह से डेली प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।